अस्सलाम वालेकुम, इट्स रेहान इकबाल एंड वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हमारा कुछ एक कंपटीशन होने वाला है, लाइक स्टूडेंट लाइफ ऑन रशिया पे सेंट पीटर्सबर्ग में। तो मैं वहाँ जा रहा हूँ सीधे रिप्रेजेंट में यूनिवर्सिटी इमैनुअल कैंट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी। तो अभी बजे है लगभग 8:30 पौने 9 सुबह के, और मैं निकल रहा हूँ एयरपोर्ट के लिए। कुछ बाई किसी शॉप से खा लूँगा कुछ बेसिक फ्रूट वूट एंड निकल जाऊँगा। एंड विल सी यू, विल कैच अप, विल सी कैसा रहता है कंपटीशन एंड कैसी रहती है ये चीज़ें। विश मी लक। सो एक्चुअली आई रीच बस स्टॉप एट टाइम एंड the bus will come in a few minutes and then direct to the airport. It's not so far away from our like living place. Reach the airport like this something. Yes, sir. I got my boarding pass. Basically, I'm near the airport gate, and for the first time, I'm flying with a Russian airplane manufactured in Russia. So it will be my first experience. I flew like Airbus, Boeing, but for the first time, Sukhoi Superjet 100, I think. Yeah, we'll see. I'm at the airport, and boarding will start soon. Like this is the Sukhoi Superjet 100. It looks different from Airbus and Boeing. Compact aeroplane. Really a smart airliner. 2 सीटें यहाँ से, 3 सीटें यहाँ से, 5 सीटें. See how compact it is. St. Petersburg. It's too cold on the street. I don't know what the temperature is. Basically, I reached the hotel and I will stay for some time and I will just go out and eat something. As far as my flight, it was like private jet but extra large size wala. It was like 20 rows the total, I think, and 5 seats wale. First time I saw this small plane and it's good overall. I got my meal here at a restaurant, halal. मैं होटल वापस पहुंच गया हूँ एंड इट्स एक्चुअली अब सोने का टाइम हो गया एंड लाइक टुमारो आई विल वेक अप एंड डायरेक्ट टू द लोकेशन, टू द यूनिवर्सिटी जहाँ पर कंपटीशन है. तो विल सी व्हाट विल हैपन. इट्स माय फर्स्ट टाइम लाइक दिस. सी यू गाइस, विश मी लक. We finally reached the location. My name is Sharihan Ahmed. I'm from Kashmir, studying at Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad, Russia. I'm honored to be present in the Global Compassion category, and personally, compassion helps me feel myself and peace. And I'm planning to assist hospitals across the Kaliningrad and volunteer in remote clinics and areas as a medical volunteer. So I actually was there. This is the events to Russia, 20 to 21st October in St. Petersburg, Russia. So I was here. हमारा ये हुआ कि प्रेजेंटेशन दे दिया है. अब सेंट पीटर्सबर्ग का सिटी टूर हो, लाइक वी आर हियर राइट नाउ. यूनिवर्सिटी का सारा काम हो गया है, मतलब जो इवेंट था आज का. तब बस में जा रहे हैं सेंट पीटर्सबर्ग सिटी टूर के लिए. इट लुक्स लाइक ओल्ड लाइक पामपोर हाईवे, तो बहुत अच्छा लगता था. एंड ये था दोनों तरफ से. सो मैं इस लोकेशन पे आए. इट्स आई थिंक अ मोनूमेंट. इट्स अ मेमोरियल एंड नाउ कन्वर्टेड इनटू अ ग्रेवयार्ड. हीरोज ऑफ रशिया. It's Piskarovkaya Cemetery. These are the graves. Circle light rotate. Everyone died. But some of the boys they moved and they could. Ardaki vavan kornastaba
एक ना बहारोख चली हेम तमाम हरद की वावन कोरनस्तबा एक ना बहारोख चली हेम तमाम. At this beautiful place, see, like this looks amazing, really. This place is amazing. We're getting back to the bus. Just पर शहर ये दिल बगच हांगरे दूरे ये चोने बमाजरे Mazarei, Mazarei, Gatshagarei, Bage dilas faj melolish pulai. Subway, Leninsky Prospect. Zu jan tan man se pat fida. बेदर्द सारी जो दर्द का शीत खता में सकोरत वफाश कस चुचनी सालम गवा साल चीत सम्योनुई हजरत पलई. Like I reached the most famous place of St. Petersburg, Isaac Cathedral. Here you can see the Isaac's Cathedral. Oh my God! Isaac's Cathedral is it's the first time here, and I like it. Leninsky Prospect. It's very beautiful. Çeyded tarfan yımbır zalay yımbır zalay Hazrat balay Vage dilas faj melolish pulay Yıknat poşan bumal karay Şaçmay Dilshad chumay. You can see how beautiful it is. The lake. We reached back to the this university, and now we're going maybe to hotel. But I'm going to meet a person, a known person. So today is my third day here at St. Petersburg, and आज हमें चेकआउट करना है. देखते हैं मे बी रात को देर फ्लाइट होगी तो अभी चेकआउट कर रहे हैं एंड देखते हैं क्या होता है. अब जा रहा हूँ मैं. सर्दी थोड़ी ज़्यादा लग रही है तो मैंने सोचा कि कुछ थोड़ा ज़्यादा पहन लेता हूँ एंड इससे ऊपर जैकेट ले लूँगा और चेकआउट कर लूँगा. अभी मिलते हैं आगे. आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉर्ड एवरीथिंग बिकॉज it was not possible. It looks a lot different when vlogging after. See how beautiful it is, mashallah. मैं बस में जा रहा हूँ. बहुत बड़ी बस है. पूरी बीच में जो ट्रेन या ट्रैम के बीच में होता है ना वैसी बस है. ये यूनिवर्सिटी होस्ट कर रही थी इवेंट. देखो कैसा लग रहा है. कश्मीर यूनिवर्सिटी जैसा नहीं लग रहा क्या? पेंटिंग्स. корпусе, и на третьем этаже у нас располагается большой... Harud? Are you going to turn and walk towards me? We came to football ground. See this. बहुत खूबसूरत लग रहा है ऐसे. एक वीडियो से ज़्यादा अच्छा ऐसे लग रहा है देखने में. स्विमिंग पूल. Dilshad chumay, shad chumay, Dilshad chumay. Finished the event and I got the second place. I will show you the certificate. I got the second place in my nomination. It's good. I thought I applied for 2 nominations. For that there was a different category like grand prize, but I filled for both, but I was not able to participate in that one. But it's okay, we'll see. Everything is good. It was a lot of confusion for me because I just completed my first year and complicated terminologies here, so I'm still thankful that I won it. Second place is good, and I think the people who secured the first places will go to Moscow from 8 federal districts, like central federal district like something, and they will all go to that place, Moscow, for the final round. It was great.
I'm glad I'm leaving. There is a metro station. See how beautiful the building is. बोलता है ना इस शहर ने मेरा दिल ले लिया. I went to Moscow, but मेरे को ये अच्छा लगा थोड़ा ज़्यादा. देखते हैं लाइफ में क्या क्या देखने को मिलेगा. और फर्स्ट टाइम इन पीटर्सबर्ग मेट्रो. SPB सबवे. 2 लाइन्स निकलती है. Too simple and organized. Great. USB charging here in the metro exit. And Leninsky Prospect once again. Yesterday we went on a bus tour, but today specifically to the Leninsky Prospect. I think it looks more beautiful when I saw it yesterday. We don't know where are the places, like the central places. One strange thing जो मेरे को यहाँ पर पता चली, I talk to many people and they say like, is it halal? They say Da Kanishna, even if they are Muslims, they say Da Kanishna, it's halal. They're like, yes, it's halal. I say how? It's not pork, it's any suvenina, it's halal. So that was a shocking thing for me. It's chicken, it's mutton, beef is halal. So it's normal meat, it's halal. So that was a bit shocking for me. Placing an order here at Roastix like this. See, wet white, 8 rubles. Great. Really, this strawberry shake is very tasty. Need to cross there, and there is a halal place, I think, and I will eat a pizza there maybe. I came here to place Pizza Reza, and after I think 1 year, I'm eating a pizza in Russia. It's a great place, and see, halal is written there. MashaAllah, Barakallah. I had a pizza here. Great. First time trying a pizza in Russia. Alhamdulillah. Yeah, my friend gifted to me. For privacy reasons, I can't show his face, but it's great. I hope him success. Yeah, I got a pizza. I got this drink. Thank you, bro. Thank you. We're going back to the airport. Location of this restaurant was the Pizza Reza Halal. It was Leninsky Prospect 111 Corpus 2. Should visit there. Truly recommend it. He told like it's like an Irani chai or anything, but I think it's more like the Rani juice we used to drink when we were child. You can relate it if you know. To the airport. Departure. To be precise, I got my boarding pass. Yeah. You have free charging and paid charging also, like Yandex Pay. Like you need to scan the QR code and one cable or something will come out. Here it goes. I'm waiting for the boarding. Boarding हो जाएगी मतलब 22 सुबह को अर्ली मॉर्निंग एंड 22 हम पहुंच जाएंगे बाई. मतलब आज बोर्डिंग हो जाएगी, आज भी हम पहुंच जाएंगे सुबह कल गाड़ी इंशाल्लाह. फाइनली रेडिंग फॉर द बोर्डिंग होगी, सीधे पहुंचेंगे शहर एंड विल रेस्ट अ बिट इन माय रूम. फ्लाइट में जा रहा है फाइनली. आस्क्ड हर फॉर अ सीट. आई गॉट एक्स्ट्रा लेग रूम सीट. ये क्लास एग्जैक्टली है, पर्दा डल जाता है, पता नहीं है क्या, बट मैं देखता हूँ लास्ट में आपको बताऊँगा इस क्लास में क्या है. और ये दो जगह भी सेकेंड रो और थर्ड रो, इसमें एक्स्ट्रा लेग स्पेस है. एंड इन्होंने मेरे को साइड वाली सीट भी खाली दे दी. मैं इस सीट पे था और अब मेरे को ये भी मिली, तो मैं ऐसे सोचा कि थोड़ा मैं भी खिड़की से भी क्लिक करूँगा, इसलिए मेरे पैर दुख रहे हैं. एंड आई नो ये सीट किसके लिए है. जो बच्चा होता है ना किसी के पास, पेरेंट्स के पास जो इन्फेंट होता है, जो झूले पे होता है वो झूला, उसी के लिए आगे इसमें जगह है. Finally at Kaliningrad. Yes, taxi is here and finally went back. One eternity later. It has been almost 1 month, around 25 days since I recorded that vlog. After that I reached here. I had a lot of lessons and lot of work to do, so I was not able to edit it and record this last part of the vlog.
So finally I edited it, and I hope I will post it today. And after that, that's it. Thank you for being here in the vlog till the end. Do share, to like, subscribe, comment. If you have any doubts, you can write me at Instagram at the rate of THEREHANIQBEL. May Allah bless you. Fi amanillah.